industry. And if you remember, we had identified 3 areas under which the trade remedy laws were needed. Number 1 was on account of unfair trade, and under unfair trade we saw that the imports can be on 2 accounts. Number 1, subsidized goods, and number 2, dumped goods. For dumped goods, the measure available for a country after investigation is the anti-dumping measure, which is our current topic, and in case of subsidized imports, the concept was of countervailing measures. Apart from that, we also had an overview of what were safeguard measures and why they are levied and what is the basic purpose. And we saw that safeguard measures are imposed on 2 accounts. Firstly, where the surge of imports increased, or there was surge of imports itself. In other words, by lowering down the tariffs, by having a commitment under market access procedure under GATT, if you have lowered the tariffs and bound them, and a lot of imports start coming into your country, so you could take safeguard measures to protect the domestic industry. The other, which is a very important and probably the most important with reference to Pakistan, would be the safeguard measures or additional protection required for economic development or for protecting new or infant industry or protecting any existing industry. So this was a little background where we started from, and we are doing with the topic anti-dumping measures, and we had cover most of the things under it. And just to give you an overview, we have talked about the export price, we have talked about the normal value, the like products, and how to determine the identity of the like products. We also went to see that the situations in which domestic price, that is the normal price, could be rejected, and what was ordinary course of trade and particular market situations. And we also talked about sales below per unit cost in substantial quantities. And then we finally reached the definition of the export price to a third country and constructed value. And probably we had also covered this aspect. So the next topic today is the calculation of cost of production. We have probably touched this as well. But when you are constructing or when you are calculating the cost of production, it is normally done on the generally accepted accounting principles, as we are all aware who are familiar with the accounting side. And then we also went through the calculation of administrative and selling and general costs and the profit rate. Anything? And as far as the calculation of export value and the normal value is concerned, although they are available on here in these slides, but I would like to touch them when we are covering the calculation of dumping margins itself. So to avoid repetition and to do it at the appropriate time, we'll consider it at that time. Can anybody could please? Slide 45. So while you are determining the normal value for a non-market economy, and by the way, what is a non-market economy? Any idea? What is a non-market economy? This is non-market. So obviously it means
where a market where general market principles are not observed. And what are general market principles? That supply and demand, prices and distribution is not controlled. So if on one side it's non-market, then on the other side it's a free market. So probably to understand what is a non-market, it would be better if we try to understand what is a free market. Free market is where government doesn't have any control over the prices or the distribution channels or the distribution quantities. So it's free. So whatever is different from being free is controlled. If it's controlled, if there are government controls over pricing, if there are government controls over the quantities, then it's a non-market economy. Any example? Singapore is just the free economy. Yes, anybody else? What is a non-market economy? Which country is it? China. Central Asia, earlier. Yes, China is now opening up, otherwise it's still controlled. And Eastern Europe, they were all controlled economies, non-market. So you have any doubt in your mind? Let's have a discussion on it. What made you? जी आ चुका है, but that doesn't mean कि it's a market economy. चाइना को जो denial था of entering into, वो शायद human rights के ऊपर था. The concept is what is to understand what is non-market, you must understand what is market. What are the forces in the market which control, what are the variants in the market? Number one, the quantities available. Number two, the price, right? If these two things are controlled by anybody, then it's not a free market. If it is not a free market, what is it? It's a non-market. Yes, जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं वो नॉन मार्केट है, इसीलिए मैंने चाइना का नाम लिया ना. चाइना में गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है? प्रोडक्शन, इनपुट कॉस्ट्स, व्हाट एल्स? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट सेज के देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना. So do you think it's a market, free market? No, it's not a free market, because you are making available an input at a zero rate. So it's a non-market. So if you have to construct a price or determine a normal value in the non-market, now what is the difficulty to determine the normal value in a non-market economy? Parameters are not defined. Parameters are not defined. What else? Shiraz? Negotiations between two parties will be very, very official. Yes, but we'll be complicating things by saying that. Let's keep it simpler. What are those principles? इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ पे इफेक्ट करती है? नॉर्मल वैल्यू क्या चीज़ है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो व्हाट इज इट? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट नोन. आपको पता ही नहीं है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, बिकॉज या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्री जा रही है या कुछ और चीज़ें इनपुट्स उसको सब्सिडाइज रेट्स पे मिल रही हैं, उसकी प्राइस कंट्रोल्ड है, लेबर के जो उसके हैं वेजेस हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वो जो मार्केट जो लेवल है ये स्टैंडर्ड है लेबर का वो उसको अवेलेबल नहीं है. एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड. फॉर इंस्टेंस, आप हाउस अलाउंस शायद ना दे रहे हों क्योंकि आपने हाउसिंग फैसिलिटी दी हुई है, आप मेडिकल अलाउंस शायद ना दे रहे हो कि आपने और जगह फैसिलिटी दी है. सो देयर कुड बी 101 थिंग्स कि जो आप अकाउंट फॉर ही नहीं कर सकते हैं कि इज इट ए नॉर्मल कॉस्ट और नॉट. नाउ व्हेन इट इज नॉट अ नॉर्मल कॉस्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट? देन इट सेज, देन यू फाइंड अ सरोगेट कंट्री. व्हाट इज अ सरोगेट कंट्री? अ सब्स्टिट्यूट कंट्री, जिसमें उसी किस्म के पैरामीटर्स हों, उसी किस्म की इकोनॉमीज़ हों, और वो जो एक्सपोर्ट्स हैं टू एनी थर्ड कंट्री, यू कैन टेक दैट वैल्यू एज अ नॉर्मल वैल्यू.
किस में कंट्रोल करती है? फॉर इंस्टेंस नेम द प्रोडक्ट। वीट नेसेसिटीज में जाता है। कॉटन में कैसे? एक है सपोर्ट प्राइस, एक है मैक्सिमम प्राइस। व्हाट इज सपोर्ट प्राइस? सपोर्ट प्राइस है कि आप कहते हैं कि ग्रोअर को एक मिनिमम कॉस्ट इंश्योर करने के लिए आप एक मिनिमम प्राइस उसकी फिक्स कर देते हैं, तो वो उससे नीचे नहीं प्राइस जाती है, अदरवाइज गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम्स द बायर। सो दैट इज सेपरेट, दैट इज सपोर्ट प्राइस। नहीं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है ना। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि किस सेक्टर में चाइना, अनलेस यू ले योर टू दैट नहीं पता लगेगा। देखिए जो मैंने आप सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट द ईस्टर्न। नेक्स्ट, what do you mean level? प्राइस को डिस्टर्ब करती हो उसको आपने टू द रियलिस्टिक, नॉर्मल एंड रियल प्राइसेस। किस में नहीं होती? नॉर्मल वैल्यू में टैक्सेस तो होते हैं ना, लोकल टैक्सेस तो होते हैं ना। अब क्या होगा? लेट मी क्लियर, दिस इज नॉर्मल वैल्यू और द होम प्राइस। जब ये फैक्ट्री से निकलेगा, हमारे यहाँ सेल्स टैक्स होता है, बाहर वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट? दे कुड बी एनी अदर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो सकती है। इसी तरह जब ये एक्सपोर्ट प्राइस है, तो ये जब बॉर्डर से क्लियर करेगी तो इसके ऊपर भी कस्टम्स ड्यूटी होगी, सेल्स टैक्स होगा, अदर चार्जेस होंगे। तो इन सब चीज़ों को अब जब आप इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, तो दिस मीन्स कि यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट्स करें, यहाँ से भी एडजस्टमेंट्स करें, सो दैट द प्राइसेस आर एट द सेम लेवल। So if you try to see in a diagrammatic way, it is the normal value, you've got adjustments, you reach adjusted normal value, and then you have export price, you account for the adjustments and you get the adjusted export price. Were you not in the class? I'm just trying to repeat, although I've just finished it. Conditions in terms of sale हैं, level of trade है, taxation है, quantities हैं, physical. You're not attentive, huh? So what will happen if the adjustments are not made? Yes, Shiraz. If the adjustments are not made on both the sides, how will difference affect? क्या होगा difference से? Yes, it will be difficult to determine the dumping margin. या वो बहुत हाई हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा, रियलिस्टिक नहीं रहेगा। अगर आप होम प्राइस में एडजस्टमेंट्स नहीं करते और एक्सपोर्ट प्राइस में एडजस्टमेंट्स कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन? डंपिंग मार्जिन विल इंक्रीज। एंड अगर आप एक्सपोर्ट प्राइस में एडजस्टमेंट्स नहीं करते, रिवर्सली नॉर्मल प्राइस में कर देते हैं, तो डंपिंग मार्जिन विल डिक्रीज। एंड इफ डंपिंग मार्जिन डिक्रीजेज, व्हाट विल हैपन? कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कम लगेगी। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी कम लगेगी तो क्या होगा? प्रोटेक्शन कम होगी, जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो सारी चीज़ अगेन फ्यूटाइल जाएगी। Then we have for fair comparison, we've got some rules, we can just skip them. Next is the exchange rate. Now this is a very important thing, कि जब आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, टैक्सेशन की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जब आप लेवल ऑफ ट्रेड की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जब आप क्वांटिटीज़ की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जब आप करेक्टरिस्टिक्स की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, और फॉर दैट मैटर यू आर एडजस्टिंग एवरीथिंग टू ब्रिंग द कंपैरिजन फेयर, to have a fair comparison and to have a realistic comparison, तो it is necessary कि जो exchange rate fluctuations हैं उनको भी आप account for करें। Now what is an exchange rate fluctuation? Foreign exchange, rupee dollar parity, it keeps changing. आज 58 रुपीज़ है,
आज से साल पहले या 2 साल पहले 64 रुपीज़ था या 62 रुपीज़ था, या मुमकिन है कि जब आपका ये जो पीरियड है इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज 58 है और अभी आपके इफ़ेक्ट आ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, इंजरी आ रही है, और किसी स्टेज पे, लेटर स्टेज पे जाके जब आप उसको वर्कआउट करते हैं तो इट चेंजेस ऑल टुगेदर, एक चीज़ ही नहीं बन जाती है। सो इसकी एडजस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट की भी एडजस्टमेंट को यू विल टेक इनटू अकाउंट, and you will use exchange rate on the date which establishes material terms of sales. Material, what is material term of sale? जिस वक्त sales execute हुई है, और what is that, how that can be accounted for? Number one, the date of contract, जब आपने उसके साथ सेल का एग्रीमेंट किया इम्पोर्ट का, या इनवॉइस है, परचेज ऑर्डर है, या ऑर्डर कन्फर्मेशन है, वॉट एवर इट इज़, जिसके ज़रिए आपको पता लगे कि एक्सचेंज रेट उस वक्त क्या था। अब हाउ कैन एक्सचेंज रेट इफेक्ट इन रियल टर्म्स? ना वो तो हो गई ना बात। किस तरह फ़र्क आएगा? अगेन इट विल इफेक्ट दी डंपिंग मार्जिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी फ़र्क आ जाएगा। वो कब आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि अभी तो हम ट्रेड ले रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले रहे हैं। जिस मुल्क ने एक्सपोर्ट किया है उस मुल्क का अगर करेंसी स्ट्रांग नहीं है और वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रही है तो उसका भी, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, नॉर्मल वैल्यूज़ के ऊपर फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दिस इज़ वो टग ऑफ वॉर, आपने वैसे तो डेफिनेटली सब ने खेली होगी, वो जो रस्सा खींचने की बात होती है, बट दिस विल गिव यू ए वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट टग ऑफ वॉर इज़, एंड इट स्टेट्स कि एक्सपोर्टर कहेगा कि नॉर्मल वैल्यू को कम करे और एप्लीकेंट कहेगा कि नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा है। हियर ऑल्सो एप्लीकेंट, एक्सपोर्ट वैल्यू एप्लीकेंट कहेगा कि इसको कम करो, ये कम है, और एक्सपोर्टर कहेगा कि ये, इसको एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है अभी, कि ऐसी एडजस्टमेंट्स करे कि ये ज़्यादा हो, और इस सारे का जो नेट इफेक्ट है वो यही है कि डंपिंग मार्जिन्स के ऊपर इसका डायरेक्टली इफेक्ट जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्टर तो कहेगा कि मुझे कम होगी, यही वो भी कह रहा है। Now, there are basically three methods for working out the dumping margin. The first one being the normal value per transaction versus export price, and the other is weighted average normal value versus weighted average export price. And this method, second method, is used world over. और अपनी calculations में हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले के तहत हम डंपिंग मार्जिन्स को किस तरह वर्कआउट करते हैं। तीसरा मेथड है weighted average normal value versus export price per transaction, और it's limited to circumstances जहाँ पर पहले दो आप यूज़ ना कर सकें, लेकिन generally world over जो accepted है वो number 3 है। So after having covered the entire subject, I probably wanted to bring you to this very simple equation, and it took almost 2 lectures to do it. The thing we want to, the point we want to reach is that adjusted normal value less adjusted export price divided by adjusted export price is the margin of dumping. So this is the basic formula. सिंपल सबट्रैक्शन नहीं, ये परसेंटेज में आ जाएगी ना। नेक्स्ट, now determination of injury. Now if you remember, if you go to the first part of the lecture, you will find that there were 3 components of the preconditions for anti-dumping. Number 1 was to determine whether there is dumping or not. Number 2 is to find out whether there is injury or not. And number 3 is, जब आपने ये भी determine कर लिया कि there is dumping taking place and there is injury, the third thing is to establish a causal link between the two. And if you are able to develop the causal link between the two,
And what should be the causal link? The causal link should be that dumped imports are causing injury to the domestic industry. So even in practice or as per law, these three steps are followed. Number one, that you have to establish that dumping is taking place. How do you establish dumping? By considering the normal value and the export price, and accounting for the adjustments to them, and working out the dumping margin. And if the dumping margin is there, if dumping is there, what do? You try to determine whether this dumping has caused injury to the domestic industry. Now, what do you understand by injury? चलिए मटेरियल इंजरी बताइए, व्हाट इज मटेरियल इंजरी? Cost of production is increased. How? Cost of it has a difference of cost of production, that product which is being done is of lesser value and the one which is being produced is higher value. So over a period of time, the industry is able to maybe compete with the product which is being done. So कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगी? बढ़ नहीं जाएगी, ज़्यादा है. अच्छा, anyway. और what is injury? Local sales. What else? If the rate of investment return decreases, then it is physical injury to that product. Rate of return decreases. Any idea? Sales. Shiraz, any idea? इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट की बन रही है वो बंद हो गई, प्रोडक्ट it is affecting your domestic production seriously. That will become a serious injury. Where did you get the idea of serious injury? Going to previous slides, where we defined two types of injury. One was serious injury and one was material injury. Right. Material injury is of the lower. So generally the comments received from the class pertain to the decrease in sale, the decrease in profits, or laying off labor and things like that, and there was a new concept introduced, serious injury. Now here, let me clear one thing. We are going to talk about serious injury when we are discussing safeguard measures. So under the anti-dumping measures, it is only the material injury which is to be considered. Now, dumping margins are worked out in terms of Article 6.10 of the agreement, and injury is worked out in accordance with Article 3 of the agreement. Now, material injury, let us first just classify how many types of injuries are there under material injury. And number one is material injury to the domestic industry, or the present injury or the current injury, through which the phase through which the industry is passing. The second is threat of material injury to a domestic industry, and this is the future injury. Future injury means that you have not yet been injured, but the possibilities, the chances are imminent. It's written on walls that it is going to injure you, and the effects on the market are probably, you can start seeing them on the horizon. You cannot feel them, but you can start looking at them. And the third is that material retardation of the establishment of a domestic industry. Now we are going to talk about these three in our today's lecture. So while doing injury, we'll also on our way talk about the concept of domestic industry. And domestic industry generally means the collective production of
say more than 50%. If they are 50% and more, you can have the collective output to constitute a major production of the domestic production of that like product. Now like product we have already done, so we will not waste our time on the determination of identicity. And then we can just go to slide 61. So the basic requirements for injury finding is that injury must be present. The industry should be passing through that phase, and it must be established based on specified criteria as to the volume and price effects of imports. Now when the dumped goods are entering into your country, what's happening? It can have effect on the volume. What is the volume? It's your market share of the domestic production, and its effects on price. And the basis for the injury determination is the objective examination of relevant criteria, and there should be a positive evidence. Now by objective evidence we mean कि जो आप investigation कर रहे हैं, it is basically to remove the injury, and there should be no other criteria, there should be no other motive behind the investigation एक्सेप्ट कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आपकी सारी जो एंटी डंपिंग लगाने की जो बात है, इट इज़ बेसिकली टू रिमूव द इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नंबर वन. नंबर टू, देयर शुड बी अ पॉजिटिव एविडेंस एंड अ डायरेक्ट एविडेंस दैट द डम्प्ड इंपोर्ट्स हैव कॉज्ड इंजरी. यस, the authority which handles the law, and that is the National Tariff Commission in this case. जी जी. Obviously you will make an application to the government. जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो आपकी इंडस्ट्री जो कह रही है उसको चैलेंज कर सकती है. इट इज नॉट इंजरी. Now you are entering into a phase जहाँ पर अभी आपने वर्कआउट कर लिया है, डिटरमिन कर लिया है कि डंपिंग हो रही है, उसके बाद आपने इंजरी भी फाइंड आउट कर ली है, एंड यू हैव गॉन फॉर दी लेवी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज. नाउ व्हाट यू आर सेइंग वुड फॉलो. उस स्टेज पे वो मुल्क उसको ले जा सकता है डिस्प्यूट सेटलमेंट में. ये भी हो सकता है कि लोकल इंडस्ट्री आइटम इज नॉट दैट ड्यूरेबल, जो कि लाइक प्रोडक्ट है बट इट्स नॉट दैट ड्यूरेबल. सो द सिमिलर लाइक प्रोडक्ट इज बीइंग इंपोर्टेड एंड पीपल लाइक टू यूज द इंपोर्टेड प्रोडक्ट. देन यू कांट एस्टैब्लिश द कॉजल लिंक. यही तो कॉजल लिंक का मकसद है कि आपने ये साबित करना है कि जो डंपिंग हो रही है और जो इंजरी हुई है उसके दरमियान एक कॉजल लिंक है. वो तो आपने जब इन्वेस्टिगेशन की उसी स्टेज पे आपने कह दिया, अदरवाइज तो आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं अंडरटेक कर सकते. जी बिल्कुल चार्ज करती है. No, there is a prescribed fee of about 50,000 or 75,000 which the government would charge. So Article 3.1 establishes the basic principles for determining injury, and in particular the determination of injury must be based on positive evidence and involve an objective examination. Now positive evidence, I've just explained that there should be a causal link between the dumped imports and the injury. Number two, involve an objective examination, and the objective examination is to remove the injury from the domestic industry, and there should be no other concept. Then you have to determine the volume of the dumped imports. What is the volume? How has the volume increased or not? Number one. Number two, the effect of the dumped imports on price in the domestic market or of the like product. What will happen here? Yes, समझ नहीं आई तो पूछे ना भाई. If I'll just move over तो फिर कैसे समझेंगे? It says apart from these things you have to determine the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like product. Domestic product की prices पे क्या effect आएगा? लो जाएंगी. क्यों लो जाएंगी?
कि डंपिंग की वजह से बाहर से ही माल सस्ता आ रहा है. Number 2, consequent impact of these imports on domestic producers of like products. इनके ऊपर क्या असर जाएगा? Now we'll try to see how it happens. Rules for analyzing the volume of imports and their effects on pricing. There is a concept of price undercutting and price suppression. So we can move to the slide 64. First line, and there must have a separate page in dump text. Yes, now ye concept, I have already explained this, but if you say I can explain it again. Now there is a concept of absolute increase or a relative increase. Now suppose the domestic market is for 10,000 products, 10,000 units. This is the total national demand. Now what happens is, out of this 8,000 is domestic and 2,000 are imported. Now there is a possibility, and the ratio between them is, what would be the ratio here? How much this would be? About 80%? 4:1 ratio. ना इसकी परसेंटेज कितनी बनेगी? Suppose the whole thing drops and this comes to 4,000 and this goes to 1,000. What will be the ratio? Same ratio. No, how will it be same ratio? Again 4:1 ratio is there. Percentage same रहेगी, ratio 4:1 इसमें ऊपर है. Percentage कितनी आ जाएगी? Same like 80-20. Now if we increase this, then what will be the ratio here? 4:1. प्लस वाला 78 के करीब हो जाएगा. अब यहाँ पर नहीं, it's we are confusing the things. यहाँ पर अब हुआ क्या है? The total national demand is 5,000 over 4. This would make about 4 and 4.8. But it's going to be the same. So in other words, it's not a good calculation. But what I'm trying to tell you is कि ये जो रेशियो थी, अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है यहाँ पर 10,000, डोमेस्टिक डिमांड 10,000 रही है. सपोज इफ द डोमेस्टिक डिमांड डिक्रीजेस, लेकिन इन दोनों का जो आपस में रेशियो है अगर वो बढ़ जाता है, इन अदर वर्ड्स कि ये अगर 80-20 था और डिमांड के कम होने के बावजूद ये सपोजिंग दिस बिकम 60-40, तो दिस विल बी रिलेटिव टर्म्स. तो यू हैव टू सी कि if must be a significant increase in the dumped exports in absolute terms. Absolute तो straight हो जाती है. And what is relative production? कि production और demand यहाँ पर नीचे आ गई है, but जो इनका आपस में relationship है वो 20% नहीं रहा. That has gone up. That has gone to 40%. Have I put across the thing? What have you understood? Because I have not understood it myself. What is it? That means that the domestic demand for the imported products has increased. Although the national demand for that product has reduced, वो 10,000 से कम होके 5,000 आ गई. But the inter-sea relationship between the two, that is disturbed, और imported की increase हो गई. So it says कि अगर या तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में हो, एब्सोल्यूट टर्म्स मीन स्ट्रेट टर्म्स में, और अगर वो रिलेटिव टर्म्स में भी इंक्रीज की है तब भी वो इंक्रीज समझी जाएगी. And then the prices of the dumped imports must have been significantly lower than the price of the like product. That is the undercutting, and we'll try to see what is the definition of undercutting and price suppression. There will be increase in dump exports or Hmm? dump in exports.
कहाँ पर? First time, so there must have a significant increase in dumping. The prices of the dumped import must have significantly lower than the price of the like product. अब लो होगी तो dumping है ना. First time, there must have a significant increase in dumping. Imports में Dumped exports from that country जिसके खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं. Next. So, what is price undercutting? Price undercutting is the extent to which the price of the imported products is lower than the price of the applicant industry. That is price undercutting. What is price depression? The extent to which the applicant industry experiences a decrease in its selling price over time. अब ये price depression कब होगी? जब dumping मुसलसल होती चली आ रही है और domestic producer को क्या करना पड़ रहा है? It has to bring its prices down. वो डिप्रेस किए जा रहा है, किए चला जा रहा है. किस हद तक डिप्रेस करेगा? बाय द टाइम इट टचेस फर्स्ट इट्स लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन्स, देन इट विल ट्राई टू गो एट ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड एट थर्ड स्टेज लॉस में चला जाएगा. एंड प्राइस सुप्रेशन इज द एक्सटेंट टू विच इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी रिकवर्ड इन सेलिंग प्राइस. So these are the concepts to be remembered. You might be questioned in your final term on it. Undercutting is the extent to which the price of the imported products is lower than the price of the applicant industry. That's undercutting. अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्राइस $10 है, 10 रुपीज़ है और उसकी 8 है, तो इट इज़ अंडरकटिंग बाई ₹2. और नंबर 2, प्राइस डिप्रेशन, द एक्सटेंट टू विच द एप्लीकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस ए डिक्रीज इन इट्स सेलिंग प्राइस ओवर टाइम. वो भी इसी तरह से कम होता चला जाएगा. डिपेंड्स सेकंड जो है वो जरा कैन यू ब्रिंग इट बैक. द एक्सटेंट टू विच द एप्लीकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस ए डिक्रीज इन इट्स सेलिंग प्राइस ओवर टाइम. अभी हो सकता है प्रॉफिट हो, उसमें हो सकता है ना हो सकता है इक्विलिब्रियम पे हो. द थर्ड वन इज द एक्सटेंट टू विच इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इट्स सेलिंग प्राइस. कि आप ब्रेक इवन से भी नीचे चला गया वो. जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी? अभी उसके जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो नहीं रिकवर कर सकता ना जी. कम क्वांटिटी जब कम होती जाएगी, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. राइट. बोथ ऑल टोल्ड. वो तो एडजस्टमेंट स्टेज पे ही हम चले गए हैं, हमने सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं. हाँ, इनएफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं. Say that again, it's a good point. Say that again. That means he's happy. If he's happy, there is no complaint. If there is no complaint, there is no case of anti-dumping, and there is no investigation, and there is no procedure. लेकिन ये सारी बातें गुजरने के बाद जब he has reached a stage कि he cannot अपनी कॉस्ट को वो नहीं कम कर सकता, एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकता, what will he do? He cannot stop producing. Obviously जब वो नेगेटिव में जाएगा तो he'll make a hue and cry. हायर से क्या मतलब बना रही है? अगर बाहर वाला 12 रुपए का बना रहा है, अच्छा इंडस्ट्री ए और इंडस्ट्री बी, ये वैसे नॉर्मली होता नहीं है. इसको जब आप उसको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे लाते हैं और रॉ मटेरियल को देखते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो को देखते हैं, नो इट इज़ फॉर द डिपार्टमेंट हु इज़ वर्किंग आउट दी केस कि वो देखे कि ये इंडस्ट्री की एवरेज क्या आ रही है. वो ऐसे नहीं है जो हाईएस्ट को लेगा. केस जो है पूरी इंडस्ट्री
पूरी इंडस्ट्री का बनेगा जी, पूरी इंडस्ट्री का जाएगा और वहाँ पर जाके फिर जिस इंडस्ट्री ने केस किया है वो इंडस्ट्री अपना कॉस्ट डेटा देगी। नेक्स्ट अच्छा, कमिंग टू द इंजरी फैक्टर्स। ना these are some of the factors through which you can identify whether injury is taking place or not. Number one is the sales. What will happen to sales? Sales will go down, profits will go down, output for some time it will be stable and then it will go down. Market share, it will go down. Productivity, again it will go down. Return on investment, somebody mentioned here. Capacity utilization, and then you have to see the factors affecting domestic prices, जिसमें वो price undercutting, price suppression और price depression का concept आ गया. And then you have to see the magnitude of the dumping, and then actual and potential negative effects on the cash flows. Now what is a cash flow? In and out of industry. In and out of cash of industry. Yes, cash flow is जब आप sales करते हैं, you're getting उसके against जो cash आ रहा है या जो services आप दे रहे हैं उसके against जो cash आ रहा है, that is cash inflow. जो payments कर रहे हैं आप, that is cash outflow. What will happen to inventories? Inventories will pile up. Yes. इन्वेंट्रीज अगेन जिस तरह से वहाँ पर आउटपुट फॉर सम टाइम स्टेबल रही थी, इन्वेंट्रीज भी स्टेबल रहेंगी. इन्वेंट्रीज दो जगह पे जाके पाइल अप होनी शुरू हो जाएंगी, एक होलसेल स्टेज पे, एक रिटेल स्टेज पे और एक गोडाउन स्टेज पे. पूरी चेन इफेक्ट होगी. देन व्हाट विल हैपन टू एम्प्लॉयमेंट? They lay off the factory would start laying off the labor. Wages reduced. Growth, ability to raise capital, ability to raise investment, they'll all get into negative. Now accumulation is a concept which we are not doing it in this class, but accumulation is जहाँ पर या तो आप एक एक्सपोर्टर के खिलाफ एक मुल्क के खिलाफ लेते हैं, या जब आप हर जगह से डंपिंग हो रही है तो फिर आप उन सबको डेटा को accumulate कर लेते हैं. We are not considering this at the moment. Now causal relationship, we have talked about the causal relationship, and we'll come to slide 74. The things which I am leaving, I'll not be including them in your examination. Now as far as the threat to serious injury is concerned, now what is threat to injury? Threat to injury is that there is a possibility that a country is trying to or negotiating with your importers to supply some dumped imports, or there is a possibility that imports from China are taking place and China is supplying say about 20% of your domestic market at the moment, but it increases its capacity utilization by say another 50% or 60%. So you have a basic reason, you have got a cogent reason that initially it was only dumping to have a market of about 10% or 15%. But now considering that market, China has set up another plant by which it has increased its capacity. Now what will happen? There is a threat to serious injury. The things are documented, the things are apparent, the things are on ground, that the country is coming up with the number of goods. So again, this threat of serious injury should not be a mere idea, a conjecture, a possibility. It should be proved by proper documentation. जी मेरी जान पूरा चैप्टर ही अनफेयर ट्रेड का हम कर रहे हैं. How would you determine that this product is going to be marketed in the local industry on this price? Like once it's not
Could you switch it off? How can you do with the Suppose we are talking of it's a proposition. It's not a real life thing. It's a proposition. Suppose कि अभी गाड़ियाँ आनी शुरू नहीं हुई हैं चाइना से, but we are assuming कि गाड़ियाँ आ रही हैं. We have got about say 100 हमारी डिमांड है टोटल, या 1000 डिमांड है. इसमें से लोकल टोयोटा जो है वो पूरी कर रही है से अबाउट 30%. Honda is doing about again 30%, and Suzuki is, we are talking of a specific model, say 1300 plus or something like that. Suzuki is doing 20 and others are doing say at 60 and other 20. Now this makes about 100%. Now what will happen is that we have seen that in 202, it's an assumption that the Chinese car has taken 80 or 20% of this market share. Now the dumping is already there, but we are saying that there is further going to be a threat to this industry, as in 2003 China has increased the installed capacity of this product say by 50% in its home country, and the capacity which has been increased corresponds to this model. So this is how you can establish that since China has increased its capacity utilization or it's enhanced its capacity, these exports are going to take this, increase this share, and maybe it goes to 50-50. So this is a straight linkage here bit. Sir, in some way we can put this example in that scenario in which we said it's not easy third country. Sorry, does anyone has car IDG 5496? किसी की गाड़ी है IDG 5496